हेलो एवरीबॉडी, दिस इज़ रोहित एंड आज हम रीडिंग का एक और पैसेज सॉल्व करने वाले हैं। सो लेट्स रीड द टॉपिक एंड इसे बहुत ही आराम से हम सॉल्व करेंगे। सो लेट्स सी, द टॉपिक इज कुड अर्बन इंजीनियर्स लर्न फ्रॉम डांस। सो लेट्स सॉल्व इट। सो ऑब्वियसली एज यूजुअली पहले क्वेश्चंस पढ़ने हैं, उसी के बाद हमें आंसर्स देने हैं। सो लेट्स सी व्हाट आर फर्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस. Reading passage 1 has 7 paragraphs A to G. Which paragraph contains the following information? So we have matching information question. अब हमें पैराग्राफ को इन्फॉर्मेशन के साथ मैच करना पड़ेगा। So ये क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी होते हैं, लेकिन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम सिंपल भी होते हैं। अब ना पैराग्राफ A to G हमें सीरियल नंबर दें, तो हमें ये बताना है कि ये जो इन्फॉर्मेशन 1 है ये किस पैराग्राफ में, दैट इज ऑल। अब जब भी हम मैचिंग इन्फॉर्मेशन करते हैं तो हमें 2-3 चीज़ों का ध्यान में रखना पड़ता है। जो सबसे पहली चीज़ है वो है आपकी ऑब्जर्वेशन। सी मैचिंग इन्फॉर्मेशन के लिए, बिकॉज सारी इन्फॉर्मेशन मैच होने वाली है, तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन पढ़नी है कि वो कौन सा आइडिया कैरी कर रही है। सो लेट्स रीड दिस। रेफरेंस टू एन अपीलिंग वे ऑफ यूजिंग डांस दैट द राइटर इज नॉट प्रपोजिंग। सो ऑब्वियसली एन आइडिया, द आइडिया हियर इज नेगेटिव। हम नेगेटिविटी और पॉजिटिव आइडिया भी देखेंगे। नाउ लेट्स सी एन एग्जांपल ऑफ ए कॉन्ट्रास्ट बिटवीन पास्ट एंड प्रेजेंट अप्रोचेस टू बिल्डिंग। सो यहाँ पे हमें क्या दिया है, एग्जाम्पल दिया है एंड नाउ दे हैव गिवन अस डिफरेंस। तो यहाँ पे कंपैरिजन दिया हुआ है, तो जिस भी पैराग्राफ में ये बात होगी वहाँ पे हमें कंपैरिजन का एक कॉन्टेक्स्ट मिलेगा। So this is comparison. Now let's read this. Mention of an objective of both dance and engineering. तो यहाँ पे किस चीज़ का दिया होगा, एक ऑब्जेक्टिव दिया होगा, दैट मीन्स ए पर्पस दिया होगा हमें। सो ऑब्जेक्टिव ऑफ बोथ डांस एंड इंजीनियरिंग। हमें एक चीज़ पे और ध्यान देना है, कभी भी अगर ऐसे मेंशन ऑफ एन दिया हो तो एग्जैक्टली इसका कोई ना कोई एग्जाम्पल दिया होगा हमें ज़रूर। रेफरेंस टू एन अनफोर्सीन प्रॉब्लम अराइजिंग फ्रॉम इग्नोरिंग द क्लाइमेट। सो यहाँ पे भी एक नेगेटिव आइडिया है, तो हमें अब देखते हैं और इन्फॉर्मेशन तो नहीं। यस, फिफ्थ भी है। वाई सम मेजर्स इंटेंडेड टू हेल्प पीपल आर बीइंग रिवर्स्ड। अब ये आइडिया भी क्या है, दिस इज ए reciprocal, let's say reciprocal idea, or let's say in easy words it's a negative idea only. Reverse reference to how transport has an impact on human lives. Now it has a positive idea, impact on human life. So इसमें हम मार्क कर लेते हैं transport and how is the keyword here. How means किस तरह से. So this is what we are going to focus on. So हमने सारे ऑप्शंस पढ़ लिए, एक बार इन्हें ढंग से फिर से पढ़ते हैं। सारी सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन को आपको बहुत अच्छे से एनालाइज करना ज़रूरी है, क्योंकि यही आपके आंसर की बेसिस बनेगी। सो रेफरेंस टू एन अपीलिंग वे ऑफ यूजिंग डांस दैट द राइटर इज नॉट प्रपोजिंग। ये नेगेटिव आइडिया है कि राइटर इसको सपोर्ट नहीं करता है। नाउ एन एग्जांपल ऑफ कॉन्ट्रास्ट बिटवीन पास्ट एंड प्रेजेंट अप्रोचेस टू बिल्डिंग। तो बिल्डिंग का कोई कंपैरिजन किया है इन्होंने पास्ट और प्रेजेंट का। मेंशन ऑफ एन ऑब्जेक्टिव ऑफ बोथ डांस एंड इंजीनियरिंग। तो पॉजिटिव आइडिया है हमारा। तो यहाँ पे डांस एंड इंजीनियरिंग के ऑब्जेक्टिव के लिए बात करनी है हमें। नेक्स्ट है रेफरेंस टू एन अनफोर्सीन प्रॉब्लम। अनफोर्सीन प्रॉब्लम ये हमारा होगा कीवर्ड। अनफोर्सीन प्रॉब्लम मतलब जो पहले देखी ही नहीं गई या जिसके बाद जिसको एक्सपेक्ट ही नहीं किया गया। एंड दिस आइडिया इज नेगेटिव बाय डिफॉल्ट। फिफ्थ, व्हाई सम मेजर्स इंटेंडेड टू हेल्प पीपल आर बीइंग रिवर्स्ड। सो यही है रेसिप्रोकल, मतलब कुछ करा जा रहा था लेकिन उसका उल्टा हो गया। ये वाला सेंस जहाँ मिलेगा वहाँ हमें आंसर मिल जाएगा। नाउ रेफरेंस टू हाउ ट्रांसपोर्ट हैज एन इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन लाइफ। सो ये ट्रांसपोर्ट और ह्यूमन लाइफ की डिपेंडेंसी के ऊपर होगा। सो लेट्स रीड क्विकली द पैराग्राफ्स एंड फाइंड द आंसर्स। 6 सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन है और 7 पैराग्राफ है, मतलब एक ऐसा पैराग्राफ जरूर होगा जिसमें इन्फॉर्मेशन नहीं होगी। Let's read. There is usually another instruction that says one paragraph may have more than one set of information. So ये पढ़ लेते हैं। नहीं, इसमें ऐसा नहीं है, इसमें एक पैराग्राफ एक ही इंफॉर्मेशन कैरी करेगा। So let's read this. Let's start reading the first paragraph and quickly find the answers.
अब देखो 4 मिनट इसी में लगे हमें समझने में, इंट्रोडक्शन में, बट अगेन अब हम क्विकली सॉल्व कर लेंगे इस चीज़ को. The way we travel around the cities has a major impact on whether they are sustainable. Transportation is estimated to account for 30% of energy consumption in most of the world's most developed nations. So lowering the need for energy using vehicles is essential for decreasing the environmental impact of mobility. But as more and more people move to cities, it is important to think about other kinds of sustainable travel too. The ways we travel affect our physical and mental health, our social lives, our access to work. Now, this information is given here, and culture, and the air we breathe. Engineers are tasked with changing how we travel around cities through urban design, but the engineering industry still works on the assumptions that led to the creation of energy consuming transport systems we have now. The emphasis placed solely on efficiency, speed, and quantitative data. We need radical changes to make it healthier and more enjoyable and less environmental damaging to travel around cities. So technically यहाँ पे हमें एक बीच में इंफॉर्मेशन मिली थी that was about कि कैसे हम इस पे डिपेंड करते हैं. So obviously I think I got one answer, that is how transport has an impact on human life. So ये हमें पता लग गया कि हमारा सब कुछ इस पे डिपेंड करता है. ये A में बात हुई है, तो इसको हम कर लेते हैं अंडरलाइन. दैट मीन्स हमने ये वाला आंसर पूरा कर लिया है. लेट्स रीड नेक्स्ट. B पैराग्राफ पढ़ते हैं क्विकली बिना रुके. वी आर गोइंग टू रीड द नेक्स्ट पैराग्राफ. So let's see. Dance might hold some of the answers. That is not to suggest everyone should dance their way to work. अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, डांस. अगर हम एनालाइज करें यहाँ पे डेटा, सिर्फ 2 ही सेट ऑफ इंफॉर्मेशन में डांस की बात हुई है. सो लेट्स रीड दिस. ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, एनालिटिकल चीज़ है. रेफरेंस ऑफ एन अपीलिंग वे ऑफ यूजिंग डांस दैट द राइटर इज नॉट प्रपोजिंग. एक ही हो गया डांस वाली बात, और एक और है मेंशन ऑफ एन ऑब्जेक्टिव ऑफ बोथ डांस एंड इंजीनियरिंग. ये बात होगी. सो 2 ही ऑप्शन है जो डांस और इंजीनियरिंग डांस को कैरी करते हैं. एक में तो यह है कि जो प्रपोज नहीं कर रहा है डांस का तरीका, और दूसरा ऑब्जेक्टिव ऑफ डांस इंजीनियरिंग. देखते हैं इस पैराग्राफ में इनमें से कौन सी इंफॉर्मेशन मेंशन्ड है. सो दैट्स हाउ यू क्रिटिकली एनालाइज द डेटा. अब 2 ही ऑप्शंस में डांस की बात है, तो इस पैराग्राफ में 2 में से एक ही होगा. डांस माइट होल्ड सम ऑफ द आंसर्स. That is not to suggest everyone should dance their way to work. However, healthy and happy it might make us, but rather that the techniques used by choreographers to experiment with and design movement in dance could provide engineers with tools to stimulate new ideas in city making. Richard Sennett, an influential urbanist and sociologist who has transformed the idea about the way cities are made, argues that urban design has suffered from a separation between mind and body since the introduction of the architectural blueprint. So they are talking about the thing. Now this is the thing. If we see, this thing is carrying a negative idea. This is not to suggest everyone should dance their way to work. However healthy and happy it might make us, but rather the techniques used by choreographers to experiment with design and movement in dance could provide engineers with tools to simulate new ideas in city making. So technically he is saying that we should not use dance all the time. Instead the engineers can use the dance. So let's see which of the two carries this idea. So first is reference to an appealing way of using dance that writer is not proposing. Yes, appealing way of dance is choreographing it and not using it. So that is something which is mentioned there. Apart from it, let's read there. Mention of an objective of both dance and engineering. So they have mentioned obviously objective of dance, but not of engineering. So they have given objective, but that is not common for both. That is the reason why we are selecting first, and our answer is this. It's very simple, and you don't have to waste time on matching information if you're not finding the answer. Just keep moving on and keep selecting the answer. Let's read. So let's read C. Oh, it's D. Let's read C paragraph. Whereas medieval builders improvised and adapted construction through their intimate knowledge of materials and personal
personal experience of conditions on a site. Building designs are now conceived and stored in media technologies that detach the designer from physical and social realities they are creating. So this is a comparison given between past and present thing. So now a comparison thing has been given and we found another answer here. So let's read this. Yes, it's in C. So we have found this also. We are not going to read it the next time. An example of a contrast between past and present approaches to building. Yes, so they have given a comparison, that is physical detachment and that emotional detachment from the place if you make it on blueprints rather than visiting the site. So let's read the next thing. To illustrate, Sanet discusses the Peachtree Center in Atlanta, USA. Development typical of modernist approach to urban planning prevalent in 1970s. Peachtree created a grid of streets and towers intended as a new pedestrian-friendly downtown for Atlanta. According to Sanet, this failed because its designers had invested too much faith in computer-aided design to tell them how it would operate. They failed to take into account that purpose-built street cafes could not operate in the hot sun without the protective awnings common in older buildings and would need energy-consuming air conditioning instead, or that its giant car park would feel so unwelcoming that it would put people off getting off their cars. What seems entirely predictable and controllable on screen has unexpected results when translated into reality. So now in the end they have said about the thing unexpected reality. So this was the option which was given here. Let's read this quickly. Where it is, why some message intended to have a reverse, this is not the thing. Reference to rising of ignoring the climate, no, this is not the thing. Mention of an objective dance engineering, no. Let's read sixth. Yes, fourth. Reference to an unforeseen problem arising from ignoring the climate, yes. So this is option D, because they said they ignored sun rays while constructing the thing, and because of which the whole thing became a failure. Let's read option paragraph 3 quickly and let's find the answer. The same is true in transport engineering, which uses models to predict and shape the way people move through the city. Again, these models are necessary, but they are built on specific worldviews in which certain forms of efficiency and safety are considered and other experiences are ignored. Designs that seem logical in models appear counterintuitive in actual experience of their users. The guardrails that will be familiar to anyone who has attempted to cross a British road, for example, were an engineering solution to pedestrian safety based on models that prioritize the smooth flow of traffic. On wide major roads, they often guide pedestrians to specific crossing points and slow down their progress across the road by using staggered access points, divide the crossing into two, one for each carriageway. In doing so, they make crossings feel longer, introducing psychological barriers greatly impacting those that are the least mobile and encouraging others to make dangerous crossings to get around the guardrails. These barriers don't just make it harder to cross the road, they divide communities and increase opportunities for healthy transport. As a result, many are now being removed, causing disruption and cost and waste. So these are actually here. We have got another thing. They are saying that in British road guardrails have been installed, but instead of helping the people crossing the road, these guardrails are making it difficult for people to cross it. Instead of difficult, dangerous to cross. So because of this reason, this answer is here. The things are reciprocal. So they are saying that it was made for something and instead it reciprocal. Now let's read next one. I think we have selected all of them or one. Yes, mention of an objective, that thing is missing. So this thing is also going to be found soon. I hope you are understanding how this paragraph is turning about. We are explaining it, so it's taking a little more time, but on paper, or let's say in CD IELTS test, it is very simple to solve. So let's move to next thing, and last paragraph is F. If their designers had had the tools to think with their bodies like dancers, now they are talking about dance. Again, so we had one last option that was about dance. Let's read this and imagine how these barriers would feel
there might have been a better solution. In order to bring about fundamental change to the way we use our cities, engineers will need to develop a richer understanding of why people move in certain ways and how this movement affects them. Choreography may not seem an obvious choice for tackling this problem, yet it shares with engineering the aim of designing patterns of movement within limitations of space. It is an art of develop now. It shares. Now, this statement is given that it shares with engineering the aim of designing patterns. So, actually, uh, the aim of dancing and choreography is also to design patterns, and same way engineering also has the same aim. Now let's say, how will you identify it? I have always been telling people कि भाई जो आपकी pronoun है उस पर फोकस हमेशा रखो. तो यहाँ पे it लगाया हुआ, yet it shares. it मतलब कोरियोग्राफी, ठीक है. सो कोरियोग्राफी को उन्होंने रिप्लेस किया है इट से. मतलब कोरियोग्राफी एम शेयर करती है इंजीनियरिंग के साथ, एंड कोरियोग्राफी इज नथिंग बट डांस. दैट मीन्स डांस एंड कोरियोग्राफी एक कॉमन एम शेयर कर रही है, एंड दैट थिंग इज एविडेंटली मेंशन्ड, एंड दैट मीन्स हमारा ये आंसर यहाँ पे मिल गया, एफ. अब पढ़ते हैं फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चंस एंड इसको सॉल्व करते हैं. सो क्विकली वी आर हियर. तो हमें अब मिल गए हैं नेक्स्ट फिल अप क्वेश्चंस, एंड फिल अप क्वेश्चंस आर ऑलवेज द सिंपलेस्ट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस इफ यू विश टू अंडरस्टैंड. सो फर्स्ट वी हैव गार्ड रेल्स. तो गार्ड रेल्स के बारे में बात कहाँ हुई थी? इफ़ यू रिमेंबर, हमने पूरा पैराग्राफ पढ़ लिया. मैचिंग इन्फॉर्मेशन और मैचिंग पैराग्राफ में ये होता है कि हम पूरा पैराग्राफ पूरा पैसेज पढ़ लेते हैं और फिर हमें आइडिया हो जाता है कहाँ पे कौन सी बात हुई है. अब गार्ड रेल्स की बात पैराग्राफ ई में हुई थी. दैट मीन्स हमें आंसर्स पैराग्राफ ई से मिलने शुरू हो जाएंगे. दैट मीन्स हमें इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है. हाँ, ऑब्वियसली आंसर्स हम देखो 6 पैराग्राफ से पढ़ा है और आंसर हमें 5th से मिलना शुरू होंगे, तो बच्चे कहेंगे यार ये उल्टा सीधा आंसर्स क्यों चल रहा है, आगे आगे क्यों नहीं चल रहा है. आइल्स में कभी भी आगे पीछे आंसर्स नहीं चलते हैं. इट इज़ ऑलवेज अबाउट द आइडिया. आइडिया कहाँ से चल रहा है वहाँ से आपको आंसर मिलना शुरू होते हैं. सो यूजुअली नाउ इन दिस क्वेश्चन दे आर टॉकिंग अबाउट गार्ड रेल्स. सो गार्ड रेल्स की बात जहाँ पे होगी वहीं से आंसर मिलने शुरू होंगे. सो कीप दिस इन माइंड व्हाइल सॉल्विंग आइल्स रीडिंग कि आपको ऊपर नीचे नहीं देखना है आंसर, हमेशा आइडिया के हिसाब से देखना है. सो गार्ड रेल का आइडिया पैराग्राफ ई में था और वहीं से हमें आंसर मिलना शुरू होगा. लेट्स रीड दिस. गार्ड रेल्स वर इंट्रोड्यूस्ड ऑन ब्रिटिश रोड्स टू इम्प्रूव द डैश ऑफ पेडेस्ट्रियंस. अब ये बात हुई है पैराग्राफ ई में, क्विकली पढ़ते हैं. पेडेस्ट्रियन की क्या चीज़ इंप्रूव करने के लिए गार्ड रेल को लाया गया था. लेट्स रीड पैराग्राफ ई. यहाँ पे गार्ड रेल की बात कहाँ पे हुई है? एग्जाम्पल दिया है गार्ड रेल. यस, लेट्स रीड दिस. तो यहाँ पे मिलेगा the guardrails that will be familiar to anyone who has attempted to cross a bridge. For example, were an engineering solution to pedestrian safety based on models that prioritize the smooth flow of traffic. तो यहाँ पे हम आगे पढ़ते हैं कि क्या चीज़ देख रहे थे वो. ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट होगा, इसमें दिमाग थोड़ा लगाना पड़ेगा. लेट्स रीड दिस क्विकली एंड आंसर मिल ही जाएंगे, डोंट वरी. सो फटाफट चेक करते हैं कहाँ गए हम. गार्डरेल्स पर इंट्रोड्यूस ऑन ब्रिटिश रोड्स टू इम्प्रूव द डैश ऑफ पेडेस्ट्रियन. सो क्या चीज़ इंप्रूव करने के लिए? सेफ्टी या ट्रैफिक? सेफ्टी ऑब्वियसली, क्योंकि मेरे को ट्रैफिक भी लग रहा है, सेफ्टी भी लग रही है. एक बार कंफर्म कर लेंगे, डोंट वरी, हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है. while ensuring that the movement of dash is not disrupted. ओके, सो यहाँ पे आ जाएगा ट्रैफिक. मूवमेंट ऑफ ट्रैफिक इज स्मूथ, नॉट डिसरप्टेड एंड स्मूथ, दोनों एक सेम ही सिनोनिम हो गए. सो हमें 2 आंसर्स मिल गए हैं. आगे पढ़ते हैं. पेडेस्ट्रियंस आर लेड टू एक्सेस पॉइंट्स एंड एनकरेज टू क्रॉस वन डैश एट ए टाइम. तो क्या चीज़ क्रॉस करने के लिए एनकरेज होते हैं पेडेस्ट्रियन? एक टाइम पे एक ही चीज़ क्रॉस कर सकते हैं वाली. सो लेट्स क्विकली सी दिस. ऐसी क्या चीज़ है जो पेडेस्ट्रियन एक टाइम पे एक बार ही क्रॉस कर सकते हैं? लेट्स से on wide roads, they often guide pedestrians to specific crossing points and slow down their progress by using staggered access points. Divide the crossing into 2, one for each carriageway. तो यहाँ पे क्या है, एक बार में वो सिर्फ एक ही कैरिजवे को पास कर सकते हैं. सो लेट्स से वी गॉट आवर आंसर.
So let's write down quickly here और हमें अपने आंसर मिलने शुरू हो जाएंगे अब. Carriageway. Let's read next. I don't know, carriageway spelling is looking wrong. We'll see this. An unintended effect is to create psychological difficulties in crossing the road, particularly for less. Now they are saying that an unintended effect is to create psychological difficulties. That means because of this there is an unintentional effect which comes out, and that is especially with the people who are, let's see what are those people, less, who are less. After less we are going to find the answer. Divide the crossing into two. In doing so they make crossing feel longer, introducing psychological barriers. We got this thing, greatly impacting those that are the least mobile. So they are less mobile, so they have used this term. We have got our answer. So the people who are less mobile, they face this difficulty more often. Let's read this. Another result is that people cross the road in a dash way. And there is another negative result of this. And what is that result? That people cross the roads in dash way. Let's see what kind of way people cross the roads in. So let's read this. They make crossing dangerous crossing to get and encourage others to make dangerous crossing. So now the next result is to make dangerous crossing. So let's write down the answer. So cross the road in a dangerous way. So that is the second implication of this. The guardrails separate dash and make it more difficult to introduce forms of transport. The guardrails separate dash, so they separate something. Let's see what do the guardrails separate. Let's read it quickly. Okay, these barriers don't just make it harder to cross the road, they divide the community. So they separate the communities. So these barriers separate the communities. Let's write down our answer quickly. Yes, many people must be thinking कि हम एक बार में याद करके ही सारे की नहीं सर्च कर लेते हैं. वो भी कर सकते हैं, but that is going to be a risky business and I do not suggest you to take risk in this reading. And make it more difficult to introduce forms of transport that are dash. And make it difficult to introduce forms of transport that are dash. मतलब ऐसे ट्रांसपोर्ट किस तरह का ट्रांसपोर्ट है जिसको इंट्रोड्यूस करने में डिफिकल्टी आती है इसकी वजह से. सो लेट्स सी. They divide communities and decrease opportunities for healthy transport. तो किस तरह का ट्रांसपोर्ट होता है जिसको रोकते हैं? हेल्दी ट्रांसपोर्ट. So let's write down healthy transport. So that's how with which we have completed our one reading analysis. I know we have taken a little more time because we had matching information and मेरे को बिल्कुल शुरू से आपको वो कराना पड़ा कॉन्सेप्ट के साथ. And I hope you understood how matching information questions are to be solved. We'll solve more reading and you can keep watching to keep understanding the things. Obviously free time में आप बैठ के देख सकते हो readings and reels देखने तो ज़्यादा ही अच्छा है कि आप थोड़ा थोड़ा रीडिंग के कॉन्सेप्ट समझने लगेंगे. सी, IELTS रीडिंग इज नॉट ओनली इंग्लिश, इट इज ए वे मोर देन दैट. इट इज ए लॉजिकल इंटरप्रिटेशन. आपको डेटा दिया होगा, आपको लॉजिकली इंटरप्रेट करना है. दैट इज ऑल व्हाट यू हैव टू डू. सो यू कैन डू इट एंड इफ यू कैन नॉट डू इट एंड यू आर फाइंडिंग लॉट ऑफ इशूज जो मेरे को भी शुरू में आते थे, तो आप सिंपली ये वीडियोस देख सकते हो और धीरे धीरे आप मेरी तरह सोचना शुरू कर सकते हो. हाउ रीडिंग्स आर टू बी. Okay, best of luck everybody. I'll come with the next video.